हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव को डिस्कस किए थे। टुडे विल डिस्कस अबाउट इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसको हम हिंदी में भारत विद्या उपगम कहते हैं। बेसिकली इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड हाउ द सोसाइटी, स्पेशली इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, इज स्टडीड फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। भारत की अपने आप एक इंडिजिनस पर्सपेक्टिव है, एक परिप्रेक्ष्य है। उस तरीके से हम इंडियन सोसाइटी को समझना और उसको पढ़ना। इट इज नॉट अबाउट ओनली द सोसाइटी बट आल्सो द सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर मीन्स कास्ट, क्लास, family, religion, kinship. So what is that Indological perspective? When we understand Indian society, so there is a basic understanding that how the text and literature part of Indian social structure, वो संस्कृत साहित्य हो सकता है, या हमारे रामायण और महाभारत से हो सकता है, या भगवत गीता से हो सकता है। तो किसी न किसी टेक्स्ट और लिटरेचर को लेके हम उस कंटेक्स्ट में इंडियन सोसाइटी को और इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हैं। When we understand that how the idea of Indian ancient culture is different from the Western or Western civilization, जो पाश्चात्य परंपरा या पाश्चात्य सभ्यता जो है, उससे अगर हमारी सभ्यता की बात करते हैं इंडियन सोसाइटी को, तो इसकी जो कल्चर और संस्कृति वो डिफरेंट है। एंड व्हाई इट इज डिफरेंट? बिकॉज we understand the society, that how it is developed from certain perspective that is purely indigenous और इंडियन सोशल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए सारे जो कंटेक्स्ट है उसको हम समझते हैं। इवन ड्यूरिंग द आइडिया ऑफ द कॉलोनियल स्ट्रक्चर, जब ब्रिटिश हमारे देश में थे, दे ruled our country more than 200 years, but they wanted to understand that how the Indian language and culture was important, so that they can rule us. अगर ब्रिटिश की बात हम करें, जब कॉलोनियल स्ट्रक्चर में, तब भी ब्रिटिशर्स को भी इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को समझने में जरूरी था टू कंट्रोल आवर system or control our social structure. So that means even it is rural structure or urban structure, even any social structure, we find there is a uniqueness of Indianness. So that is part of our society. For example, the way we use our local language, different contextual, even any tribal language or any language with states, different states, or even caste and varna system. So to understand all these things, so there is a perspective that how the idea of Indian society is unique to understand. For example, when we understand the idea of Homo hierarchy by Louis Dumo, that how the idea of hierarchy was important aspect of to understand Indian society, unlike European civilization. अगर यूरोप की बात करें या वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें, तो वहां पे हायरार्की वाज नॉट एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, अनलाइक इंडियन एस्पेक्ट में जब हम समझते हैं इंडियन सोसाइटी को, so there is a hierarchy. So even if you go by the caste structure, we find that how the dominant caste, Jajamani system are important aspect of to understand Indian villages, unlike Europe or Western villages. तो अमेरिका या पाश्चात्य समाज की गांव को समझने के लिए जो सोशल पर्सपेक्टिव है, दैट इज नॉट सिमिलर एज वी हैव। तो हमारे इंडियन सोसाइटी की अगर आप विलेज को या रूरल स्ट्रक्चर को समझना है, सो देर आर कास्ट, देर आर वर्ण व्यवस्था, देर आर different language, there are different culture, different festivals. So that became important aspect to understand the people, to understand different social behavior, to understand social change. तो यहाँ की जो सामाजिक परिवर्तन है, उस परिवर्तन को समझने के लिए जो रियल सोशल स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्टाटस है, जो पावर है, जो पॉलिटिकल, जो डायनास्टी है, ये सारे चीजों को भी समझने की जरूरी है। So that means when we understand Indological perspective, we must understand the idea of Kumar Swami, A.K. Kumar Swami, Radha Kamal Mukherjee, D.P. Mukherjee, G.S. Ghore, Louis Dumo. So all these people, they wanted to study that how the idea of Indian society is important
to understand the way that Indian social structure has been uh, interpreted or understood. For example, if you find that how the contemporary society related to the architecture, urbanism, family, kinship, even tribal culture or any religion, so you find that there is a perspective from Indian way to understand that how this is different from other countries. So the way Ghure's idea to understand the indigenous way of the social structure, the idea of Indology, and it becomes an important aspect to understand the modern India and to understand the British rules, Islamic rule, and also the way it has come after the Vedic period or Vedic civilization. तो अगर आप इरावती कार्वे के एम कापड़िया जीएस घुरे ये सारे लोगों को आप पढ़ेंगे सो यू फाइंड दैट हाउ द कल्चर related to family marriage kinship all has a relationship with our own Vedic civilization. So even we are talking about the modern India or new India, so there are a lot of cases we find that how it has a relationship with the real indigenous context. तो हमारे समाज को, हमारी सोशल स्ट्रक्चर को, सामाजिक संरचना को समझने के लिए जितने भी सोशियोलॉजिस्ट बताना चाहते हैं that how the idea of the tribal culture और family और kinship ये सारे चीजों के साथ इंडियन एक अपना पर्सपेक्टिव है, एक उपागम है, वो जुड़ा हुआ है एंड दैट वी कैनॉट डिडक्ट. तो अगर आप वर्ण व्यवस्था, कास्ट, जाति व्यवस्था को समझना चाहते हो, सो यू फाइंड देयर इज एन इंडियन सिविलाइजेशन. वो मनुस्मृति को हम पढ़ते हैं या इवन वी रीड डिफरेंट टेक्स्ट दैट इज पार्ट ऑफ आवर डिफरेंट वेद्स. और आप अगर रामायण महाभारत को भी आप समझेंगे सो देर आर मेनी थिंग वी फाइंड it is very much close to understand the modern India or even it is the ancient India. So डूमो की perspective जैसे कि मैंने बताया मॉडर्न that how the Indian context is important to understand the hierarchy unlike the Western concept of इक्वालिटी. तो यहाँ पे यूरोपियन सोसाइटी को जब इक्वालिटी की बात करते थे सो इंडियन सोसाइटी को हम एक एक्सिस ऑफ हायरार्की के माध्यम से जो स्तरीकरण की बात है उस माध्यम से हम भारतीय समाज को समझने की प्रयास करते हैं. सो दैट मीन्स एवरीथिंग पार्ट ऑफ आवर ओन इंडियन सिविलाइजेशन और इंडियन कल्चर, part of the Indian reality that exists since years. So it has a relationship to understand the Indian family systems, Indian culture, Indian kinship, and anything we study for the betterment of our social structure. Thank you so much for watching Dhal Sir classes.